Assalamu alaikum ladies and gentlemen, and welcome back to yet another episode of Firestarter. Today we have a very interesting gentleman with us. Not many times does this happen that one TV channel covers the owner of another TV channel, and we are very thankful to this gentleman who's our guest today to give us his precious time from his super busy schedule. He had to fly in for this interview, and I would like to extend my sincere thanks. We are talking about Faizan Syed, the showrunner, the make it happen guy at Health TV. Thank you so much, Faizan, for joining us. You're welcome. Thank you for coming by and giving us time as well. This is a fabulous set that you have. I believe this is one of your sets. This is one of our sets. We use this for one of the shows called Tibbe Nabbi, and in fact it's also used for the morning show. Ah, lovely. I see this amazing setup around here. Tell our viewers who are eager to learn, who is this gentleman, who is this charismatic young guy behind all of this. Tell our viewers who Faizan Syed is. But before I do that, one thing I want to add is that I'm not the only showrunner here. There's 116 other people at this channel who actually run the show. I just am here to give them the guidance they need to get the job done. So, उनके बगैर मतलब ये channel जो है चल ही नहीं सकता. मैं तो humility. उनको guide कर रहा हूँ बस. Right. और in terms of background, the media is new to me. मुझे media में अभी almost 1.5 साल हुआ है. तो अभी भी मैं भी सीख रहा हूँ और वही 116 लोग मुझे सिखा रहे हैं कि किस तरह से किया जाता है. इससे पहले मैं अमेरिका में था 12 साल से. कराची में अपनी पूरी एजुकेशन A levels O levels कंप्लीट करके बाहर गया पढ़ने. अंडर ग्रेजुएट किया मैंने साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स में. साइकोलॉजी क्योंकि शौक़ था, इकोनॉमिक्स क्योंकि पेरेंट्स ने कहा कोई बिज़नेस वगैरह की डिग्री तो होनी चाहिए. उसके बाद 4 साल मैंने जनरल मोटर्स में गुजारे. जनरल मोटर्स क्योंकि गाड़ियों का शौक़ था. 2 साल मैंने मैन्युफैक्चरिंग की. यूनियंस जो अमेरिका में सुनते हैं लोग, ऑटो यूनियंस, उनका सुपरवाइज़र रहा. फिर स्ट्रैटेजी की, मार्केटिंग की और सेल्स की तरफ मैंने 2 साल और लगाए. फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेल्स देख लिया, लेकिन एक चीज़ रहती है, फाइनेंस नहीं सीखा है. तो मास्टर्स के लिए मैंने कॉर्नेल से अपना फाइनेंस किया. फिर मैंने कहा चले फाइनेंस कर लिया तो कहीं फाइनेंशियल कंपनी में काम की जाए, तो सीमेंट की जाए ये नॉलेज बेस. वाज वेरी फॉर्चुनेट कि उस वक्त लीमन ब्रदर्स में आई वाज आल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसी वक्त लीमन ब्रदर्स जो है उसका डिमाइस हुआ और बार्कलेज ने उसको एक्वायर कर लिया. लेकिन अगेन समटाइम्स फॉर्चून जो है मतलब रास्ता होता है तो फेवर कर जाता है. एंड आई एंडेड अप विद बार्कलेज फॉर फ्यू इयर्स. और फिर वो करके जब बोर होने लगा तो मैंने कहा ठीक है, अब टाइम हो गया कि अपने वापस पाकिस्तान जाके मुल्क को भी कुछ अपनी जो नॉलेज मैंने सीखी है, जो गैदर की है, थोड़ा सा वहाँ शेयर करूँ जाके लोगों को. बिल्कुल सही. तो फिर फैसला लिया कि भाई वापस आ जाएं और यहाँ बैठे. Wow, so you've had this amazing roller coaster ride, I would call it, through all the flavors, especially on the management side for that matter. Yes, I've been very fortunate that these opportunities were given to me. Mashallah. And you, आपने जो भी decide किया and you wanted to try it and you went ahead with it, and mashallah you've been favored by luck as well and your hard work. बिल्कुल. Prevailed. जो मेरे ओपिनियन में एक चीज़ है कि भाई देखें, अपनी तरफ से एक ओपिनियन आप अपना बना लें, माइंड मेकअप कर लें कि जी ये करना है मैंने, ये करना है, और बस उसके पीछे आप लग जाएं, रास्ता खुद खुल जाएगा. ठीक है, वो लक कह लें, आप खुदा की तरफ से गाइडेंस कह लें, जो भी आप कह लें, लेकिन रास्ता खुल जाएगा. बस आपको अपनी तरफ से परसिवियरेंस दिखानी है. Why, and I'm so sure half of our viewers are just asking this question, if you were at such amazing organizations there, why would you leave for them that is, such an amazing lifestyle and you come back to Pakistan? Because the opportunity here is tremendous. ठीक है, there is security concerns, no doubt, and मतलब वो हैं day to day issues हैं, security concerns हैं, system में आपके problems हैं, challenges रहते हैं, काम करने के लिए एक मुसीबत होती है, काम कराने में एक मुसीबत रहती है. लेकिन at the end of the day जो इसका fundamental fact है ये, यहाँ 18 करोड़ 20 करोड़ लोग वो कहीं नहीं जा रहे. चलें ठीक है, आप ब्रेन ड्रेन भी कर रहे हैं, आप 1%, चलें 5%, 10% निकालें, ठीक है, you're still left with a sizable population. This population needs to eat, they need to drink something, water, fluids, beverages, they need a house, कपड़े चाहिए उनको, रोटी कपड़ा मकान जिसे कहते हैं,
और साथ में थोड़ी एंटरटेनमेंट भी चाहिए, जीने के लिए थोड़ी सी तो एंटरटेनमेंट जरूरत है। अब ये अगर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं तो समवन हैज टू प्रोवाइड दीज रिक्वायरमेंट्स, और अगर आप इन कोर इंडस्ट्रीज के पीछे खड़े हो जाएं तो आई एम श्योर देयर इज गोइंग टू बी डिमांड नो मैटर वेयर यू लुक। Absolutely, absolutely. So when you came to Pakistan, what was the mindset like? आपने सोच कर आए थे कि जी मैंने आते ही एक चैनल खोलूँगा, या was this an accidental event? How would you categorize? I'd been thinking about it since the day I went abroad. Oh wow, interesting. So I knew I was going to come back. It was just a matter कि जी कब आऊँगा और किस कब मुझे मैं चाह रहा था कि जो full set of experiences होते हैं, देखिए your 20s are about learning. Absolutely. ठीक है, अगर आप ये mindset create कर लें कि during my 20s मैं सिर्फ सीखूँगा, मुझे आप जितना सिखा सकते हैं, अपनी अंडर ग्रेजुएट तालीम पूरी करूँगा। पहले तो ऑब्वियसली टीन्स में आप अपनी ए लेवल, ओ लेवल, मैट्रिक, इंटर करके ख़त्म, फिर आपने जो है वो बैचलर्स किया, फिर आप उसके बाद मास्टर्स करें। यहाँ पे माइंडसेट ये है कि जी आप एक स्पेशलाइज करें, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, लॉ, फिर बस गुजर जाए वही सारी ज़िंदगी करें। लेकिन जी 20s में आप अपना माइंड एक्सपैंड करें। बाहर का जो एजुकेशन सिस्टम में एक फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आप डॉक्टर बनने के लिए आप मैट्रिक, इंटर करने के बाद 5 साल की कोर्स करते हैं और आपको MBBS मिल जाता है। वहाँ ये है कि 4 साल आप जनरल डिग्रीज पढ़ें, फिर उसके बाद 4 साल आप मेडिसिन पढ़ें। अब वैसे तो उस वक्त जितने भी दोस्त थे वगैरह कहने कि यार हम 8 साल क्यों, 5 साल में करके MLEs देके वहाँ चले जाएंगे, बिल्कुल 2 साल बच जाएंगे। लेकिन 10 साल बाद 35 साल की उम्र में लोग ये कहते हैं यार काश मैं वहाँ पे वो 4 साल मैंने गुजारे होते कुछ और पढ़ने में। क्यों? ताकि आपका जो माइंड है ना एक्सपैंड होता, एक्सपैंड करना, एक्सपोजर होता, एक्सपीरियंसेस होते, एक्स्ट्रा नॉलेज आता आपको, यू वुड हैव हैड अ फ्लेवर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन योर लाइफ, and those experiences eventually help you in making, I would say, better decisions. Absolutely. So when you came back to Pakistan, what made you come into entertainment, media? This was an opportunity I stumbled into. I mean, I'm not going to say that actively I chose this and we set this up. This was something I stumbled into due to the family. But it was, I've always been interested in the healthcare sector. Different members of my family are involved in different parts of healthcare. And so वो dinner table conversation जब, चूँकि मैं तो चाहता हूँ कि गाड़ियों के बारे में हो लेकिन वो होती नहीं है, हेल्थ के बारे में होती है, तो सीख लिया था वक्त के साथ। वैसे मीडिया नहीं सीखा था कि कैमरा, CPRP रेटिंग्स और प्रोडक्शन और ये वो ठीक है, लेकिन वही है कि अगर आपके पास एक ब्रॉड बेस है एक्सपीरियंसेस का, और मैं फॉर्चुनेट था कि भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं जानता था, सीख ली, मार्केटिंग प्रोफेशनली डिग्री थी उसमें सीख ली, सेल्स नहीं थी सीख ली, फाइनेंस नहीं थी, चले फाइनेंस में डिग्री ली थी लेकिन सच वो भी एक 2 साल हैंड्स ऑन नहीं था, वो भी सीख लिया। तो 20s में मैं जब ग्रेटेस्ट फॉर्चून आई हैव हैड इज दैट आई वाज टॉट हाउ टू लर्न। मुझे सीखना सिखाया गया माशाल्लाह, और अगर आपको सीखना सिखाया जाता है तो देन यू कैन, दैट्स द की। आजकल आई गेस अलमिया भी यही है कि kids just want to get away with it. नहीं, you can't. मतलब you have to put in. There are no shortcuts. There are no shortcuts. You have to roll up your sleeves. भाई आप हाथ गंदे करें, जाएं सीखें, फिर ही आके जाके पढ़ते हैं। मतलब वो जो ठीक है, if you're born with a silver spoon in your mouth वो अलग बात है, लेकिन जितने भी आप बाहर देख लें, जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज हैं, उनके जो फाउंडर्स, ओनर्स, CEOs जो भी कह लें, उन सब ने जो जॉब, एक्चुअल जॉब है, सब ने रातों लगा के काम किया है, और वो भी एक टूटी कुर्सी और एक टूटे डेस्क पे बैठ के, क्योंकि उनके दिमाग में उस पर खर्चा करना सेंस नहीं बनता। उससे बेहतर ये कि मैं अपने एम्प्लॉय के लिए एक सिस्टम दिला दूँ एग्जैक्टली, ताकि वो प्रोडक्टिव हो जाए। मेरी कुर्सी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल, मेरी गाड़ी अगर अच्छी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कंपनी आगे बढ़े। आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, तभी आगे बढ़ेंगे आप। Okay, so you said कि you had this exposure of health industry, and then you stumbled upon this idea of health TV. Who named it? That's a good question. I to this day don't know who named it. It is a family initiative, and the family came up with consensus कि जी इसका नाम Health TV रखना है, and so it was Health TV. So when I came here and I joined, it was a channel that had just started operations. It had been about 8 months, and it was figuring its way out, and that's where I joined in. So now there's a channel that's figuring its way out. There's me that's figuring their way out. It's quite an interesting scenario, but ठीक है, लेकिन we've spent a year and a half on this now since that day, and we've seen the ratings go up and the numbers go up and the content receive critical acclaim in some cases.
और व्यूअर्स पसंद करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई इनको कुछ फ़ायदे की चीज़ मिल रही है. Excellent, excellent. This is so interesting. I just hate to do this right now, but we'll take a quick short break and we'll be right back, ladies and gentlemen. And we're back, ladies and gentlemen, with our own Faizan Syed. We were talking about how Health TV came into being and how he took over the operations. Initial problems. You had zero knowledge about media. I have zero knowledge about media. MCR, edit room, FPC. That sounds so scary. It's not funny. How did you figure all of that? इतने acronyms थे कि मैं तो परेशान हो गया. MCR, PCR, FPC, GRP, CR. Initially, I just said, okay, hold on, let's just use full sentences. ठीक है, पूरे जुमलों में बात करते हैं तो at least let me get the hang of this. Look, one thing, I related this to sort of back in the day, in 2003 in 2003 I was a fresh graduate. I did my undergrad. साइकोलॉजी पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी, क्या पढ़ना पड़ा था, ज़्यादातर टाइम तो दोस्तों के साथ गुजारा. लेकिन I set foot into a manufacturing plant. It wasn't my first time. I had visited plants before. Auto manufacturing का plant था, लेकिन this was my first time as an employee. मैं अंदर गया, उन्होंने कहा जी आपका ये पूरा एरिया ये क्वालिटी डिवीजन है. यहाँ ये जो आप यहाँ से आपके एरिया में there are about 40 different workstations. इन 40 वर्कस्टेशंस पे क्वालिटी इंस्पेक्शन होती है और आपके एरिया से गाड़ी एंड करके लॉट में जाएगी विच शिप होगी. विच मेंट कि माय एरिया वाज द लास्ट एरिया जहाँ गाड़ी चेक होती थी बिफोर इट वेंट टू द कस्टमर. क्रूशियल पॉइंट, वेरी क्रूशियल. मुझे कुछ नहीं पता, मतलब आई जस्ट वाज अ फ्रेश ग्रेड. मुझे क्या पता. ठीक है, हमारे ऊपर वो सुपरवाइजर और फिर मैनेजर जो ये वो तो उनकी गाइडेंस से होता है, बट पहला दिन इतनी बड़ी ऑफिस सुपर नर्वस. और वो बिल्कुल एंड ऑफ द लाइन मेरा प्लांट मैनेजर खड़ा होता था और एरिया मैनेजर खड़ा होता था, सुपरिटेंडेंट खड़ा होता था. सो all of the plant's key people were standing at the end of the line looking at every car when they had time. And when I walked in here, this reminded me of that. Yeah, ये तो exactly वही scene हो गया कि I have no idea क्या किया जाए. What I did then is I said, देखें जी, I'll never be the expert. सीधी सी बात है. These guys ये जो यूनियन के लोग हैं यहाँ पे 28-30 साल इन्होंने काम किया. They are the experts मैंने से ही. इनके पास मैं गया टीम के तौर पे, मैं इनको ले गया, देखें जी आप यूनियन है, हम मैनेजमेंट है, ये तो हमारे डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन इसको आप छोड़ दें. हम यहाँ रोज़ सुबह 6 बजे से लेके 3 बजे तक गाड़ियाँ बनाते हैं, मिल के बनाएंगे, जल्दी घर जाएंगे, सबका फायदा. ठीक है, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये सब आप लोग जानते हैं, बस थोड़ा सा मुझे सिखा दें कि किस तरह करना है ताकि आपकी So I take it forward और आपकी जॉब आसान हो. पता तो शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम थे कि ऑब्वियसली वो मैनेजमेंट यूनियन ये वो, लेकिन ग्रेजुअली मैंने रियलाइज की वो लेवल ऑफ ट्रस्ट मेरी तरफ से था, उसमें मुझे भी ट्रस्ट करने लगे. ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखी कि जी ये दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, इफ वी अचीव दिस ये होगा, इफ वी डोंट अचीव दिस ये होगा. Simple human factors, human effect, human. And that worked to a level के within 6 months I actually had very fortunate. The plant manager came to me and said, this is the best run area in the plant. Wow. And I said, yeah, how? They said, yeah, your people are supporting you, and that's great. वही मुझे कहानी याद आई और उनका यहाँ भी यही करना चाहिए. तो रूम को एम्पावर देखिए, ये एक्सपेक्टेशंस ये हैं, अकाउंटेबिलिटी होगी. अगर हम कुछ प्रॉमिस करेंगे हम डिलीवर करेंगे. If I promised it, we will deliver. If that breaks my back, then I should have been careful when I was promising. वो मेरी बात. लेकिन प्रॉमिस कर दिया तो डिलीवर करना है. अब ऑन द अदर एंड एक्सपेक्टेशन आपने एस्टैब्लिश कर ली है कि जी ये एक्सपेक्टेशन है हमारी, नहीं होगा तो ये होगा, राइट? सो दैट वंस यू सेट दैट एंड एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं अलाइन होने लगती हैं. And that's what we're finding now. Everyone is aligned, the goals are aligned, this is our mission, vision, values, this is where we want to be, this is how we plan to get there. और सबका contribution ये है. अगर वो contribution दे पाएंगे और exceed करेंगे, here's how we can help them. तो नहीं exceed कर पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, there are the consequences as well. So, how important is it to establish a good mission statement and a vision? We've read it in the books 1,000,001 times. But I want our viewers, those youngsters out there who are studying this day in, day out, business school grads, हर रोज graduate कर रहे हैं, they're out looking for jobs. If they were supposed to start their own thing, how important is this vision
this mission statement? So, three things, mission, vision and values. About a year now ago, I don't know what each of them meant. Or I didn't know what's the difference between your mission and your vision, and what is this values component. I read it in every textbook, I could recite it and just make it sound, yeah, I know what I'm talking about. But I didn't know. True crux nahi pata. Lekin once you really start operating an entity and you start really thinking about what is it that you want to be, that's the first thing, कि करना क्या है. अगर आपको यही नहीं क्लियर है करना क्या है तो फिर आप करेंगे कैसे, पहुंचना कहाँ पे, अच्छा करके जाना कहाँ है, वो भी क्लियर होना चाहिए. ठीक है, और जाना अगर एक दफ़ा करना क्या है, जाना कहाँ है, और उधर पहुंचने के लिए हम किस तरह के लोग बनेंगे वहाँ पहुंचने तक. देखिए हर तरह की चीज़ें कर सकते हम मुकाम तक पहुँच सकेंगे, लेकिन अगर आप इस्टेब्लिश करें ये चीज़ें हमने करनी और ये नहीं करनी है, ये आपके वैल्यूज़ हो गए. विजन है कि मेरी जो सोच है यहाँ तक पहुँचना है हमने, मिशन है इस पहुँचने के लिए ये हमें रिक्वायर्ड है और ये हम करेंगे, वैल्यूज जो है और ये हमारी जो ट्रेड्स ऑनेस्टी, ऑटोमेटिकली विल स्टेप इन एंड सेव द शो. और एक दफ़ा वो क्लियर हो जाती हैं, यू इम्प्लीमेंट दिस और यू शेयर विद द टीम. अच्छा ये टीम के साथ बिल्ड करना चाहिए. अगर आपका टीम ऑन बोर्ड नहीं होगा, आप if they're not on the same page, it's just you're not going to get it implemented. So you have to have your team on board with you. Once your team's on board, then you can go places. Okay. So now at the office, you had at least some level of support from the team, that they're all experienced people. It's a two-way street. You're learning from them, they're learning from you. You give them guidance, you learn something back. Understand. What's happening at the home front now? New venture. Been there, done that with so many things. Didn't people complain? इतने अच्छा कुछ क्यों छोड़ दिया? क्या जरूरत है इस हैसल की? People thought I was crazy. 8 लाख 9 लाख की तो नौकरी वैसे ही मिलती है आपको. क्या कर रहे हैं? आराम से अपना काम क्यों नहीं करते? 9 to 5 क्यों नहीं करते? As women like to put it, वो भाभी so that being said, 9 to 5 का कल्चर जो है ना, if you really want to be successful, 9 to 5 का कल्चर अब रहा नहीं है unfortunately. It's now 9 to no time. मुझे एक रेड बीपिंग लाइट आती है ना, वो ब्लैकबेरी के ऊपर, वो आप लाइट पे चलो, जब वो लाइट ऑन होती है वो स्टार्ट से गया. सिंपल सी बात है. It's 24/7. And it's 24/7. And with a business like this, it literally is 24/7. तो मेरा ये था, in investment banking it's the same. So वहाँ भी last minute projects, late nights, sometimes you've been in the office all night, you go in the morning, you change your clothes and come back. Then bull पे और coffee पे आपका काम चलता है. बिल्कुल. Wired in, shots ले रहे हैं, that's it. बस espresso shots चल रहे हैं और काम चल रहा है. काम चल रहा है. मेरी सोच ये थी, देखिए जी अगर मैंने इतनी मेहनत करनी है, तो अपने लिए क्यों ना? अपने लिए क्यों ना? किसी और के लिए क्यों? Exactly. ठीक है, चाहिए मतलब एक चांस लेते हैं, और not all businesses work out. फेलियर का रिस्क है, लेकिन I'd rather fail when I'm 30 and realize कि ठीक है जी नहीं हो सकता है मुझसे, चलें जी नौकरी कर लें. Rather later in life. 40-45 साल का हो गया, काश मैं ये करता. वो काश मोमेंट मुझे नहीं चाहिए. मैं चाह रहा था कि अभी रिस्क लेके ट्राई कर लें, हो गया ग्रेट, नहीं हुआ तो ये है. तो जहाँ तक होम फ्रंट का सीन है, मतलब वो तो क्लियर था कि जी काम जो है उस तरह से होता नहीं, लेकिन स्टार्टअप वेंचर के साथ ये है कि रियली इज योर लाइफ. So you should be ready, dedicate your time, effort and energy 24/7. So what about the family end? How do you justify that? You have to make that. वो family will be supportive initially if it's something you're truly passionate about. अगर आप चाहते हैं, और इसमें family का भी फायदा long term etc. लेकिन family can be supportive to a certain extent. So you need to ultimately balance, जिसे कहते हैं ना, family time. आपको Sundays जैसे for example अब जाके थोड़ा सा settle down होने की चीज़ें, तो Sundays are dedicated to the family. I get to spend time with my family, and that is a day for them. I avoid taking any work phone calls, or unless it's an emergency. उससे फिर थोड़ी सी अच्छा वीकडे में ही जैसे आपने घर पे एक दिन एटलीस्ट घर पे कर लें फैमिली के साथ, तो वो आप प्रायोरिटाइज करेंगे फिर होगा, वरना आप नहीं प्रायोरिटाइज करेंगे और इस्टेब्लिश करेंगे कि बाउंड्रीज क्या हैं, कोई नहीं करेगा. Any other business ventures that you're planning to step into right now? Right now I have my hands full with this. But let's see. So, what makes you decide where to take this to, or what to invest in further? I think it's a combination.
what to invest in further. The finance guy in me says whatever generates the highest ROI. Simple. Sort of the socially responsible person in me says you should also do things that are benefiting the society. So for example, we have this show called OPD. OPD is what exactly it sounds like. It's a live clinic जो शाम 6 से 7 बजे आता है और उस पर एक डॉक्टर बैठे होते हैं. डिफरेंट स्पेशलिटी होती है उनकी. वो आके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं लाइव कॉल्स पे. आइडिया ये है कि जी आप जहाँ भी टीवी मौजूद है आप वहाँ डॉक्टर पहुँचा रहे हैं. ठीक है, वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं देगा, वो फॉर्मल एडवाइस नहीं दे सकते, लेकिन आपको गाइड कर सकते हैं कि अच्छा ये मसला है, इस तरह से सोचें, अपने डॉक्टर पास जाके ये सवाल करें. So the CSR factor is there as well. अब उसमें there is no commercial angle to it. That is just something that is the right thing to do for us. और हम करेंगे. So you just have to balance it between those. This is amazing, but again we're stuck with a break. Ladies and gentlemen, we'll take a short break and we'll join you right back. And we're back, ladies and gentlemen, with our very dear friend Faizan Syed. इससे पहले हम बात करें थे फैमिली लाइफ की. आपने बहुत ही डिप्लोमेटिकली सब कुछ हैंडल कर लिया. कुडोस टू दैट. जो कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन what's the future of media in Pakistan? I reckon there are 100+ channels out there, 82 spots. Let's be very practical. What is the future of media in Pakistan? और for that matter, अब तो वैसे भी पाकिस्तान से हम बाहर ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो for the region हम अगर बात कर लेते हैं, how do you take that? How do you see that? Very, very limited knowledge that I have is of Pakistan because I did 1.5 साल यहाँ गुजारा है, so I can speak to that, not for the region. What I foresee is there will be channels that will continue to come up because there are individuals, there are businesses, there are ventures out there that can fund the channel, and they would love to bring that medium because उनके लिए एक आवाज़ है. ठीक है, और वो आवाज़ को इस्तेमाल करके मतलब अपना मैसेज इम्पार्ट करना चाहते हैं. ठीक है, और आएंगे, आप इसको रोक नहीं सकते, लेकिन वायबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब कुछ एरियाज में मतलब लोग फंड करेंगे बिकॉज इट इज़ देयर वॉइस एंड दे थिंक दिस एक्सपेंस मेक्स सेंस एंड दे विल कंटिन्यू टू have that voice out there. But if you look at it from a purely commercial standpoint, sustainable standpoint, which is how we look at it, is this sustainable on its own? Then I foresee consolidation, okay, which you have seen in yesterday's paper. They'd already announced rumors that Geo and a production house are getting together, or there's some sort of rumors considered. Whether that's going to happen, we don't know. It's a rumor that was in the papers yesterday. इस तरह की consolidations और भी होंगी कि भाई आपके production houses channels के साथ attached हो जाएंगी, channels grouping होने लगेगी. जैसा telcos में हुआ, जैसा banking में हुआ, जब भी industry grow करती है, so eventually there comes a time or there comes a level where you simply have to consolidate. You have to join your resources to better serve the market, better serve your audience, better serve your niche for that. Exactly. Backward forward integration hogi, plus the bigger channels out there already have 2-3 channels under their umbrella because it is cost effective to use one studio, 24-hour utilization, 3 different platforms, 3 different target audiences, and therefore 3 different sets of advertisers. And ratings. So you can then group the ratings as a group. So it's a benefit, and then you attach a newspaper, a magazine, a website, etc. So you can really grow this. So I think that is the model that people should look at. Standalone channels will be, in my opinion, tricky unless you have a very different objective. I do expect a lot of consolidation over the next 5 years to take place. And at the end of the day, viewers will start demanding quality. जो distribution की तरफ से they will expect digital quality because TV sets अब advance हो रहे हैं. बाहर के ज़्यादा exposure मिल रहा है लोगों को. HD पे अब जा रहा है. HD पे जा रहा है. अगर लोगों ने घर में तो HD ले लिया, LED उठा लिया, लेकिन आपको एनालॉग का सिग्नल मिल रहा है, फायदा क्या है? तो अब डिश आने लगा है बाहर का, बॉक्सेस दोबारा आ जाएंगे. तो अब ये जब क्वालिटी अवेलेबल होगी एट एन अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, अभी मैसेस को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटल का इनिशिएटिव आ जाए, क्वालिटी इंप्रूव होगी, फिर डिमांड बढ़ेगी अच्छी क्वालिटी कंटेंट की, और उसके साथ साथ फिर चैनल्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो जो इन्वेस्टमेंट फेज आएगा ना, अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है, देन आपकी वायबिलिटी मेरी सोच में मतलब विल कम इनटू क्वेश्चन. What would you advise to the young budding entrepreneur out there, aspiring entrepreneurs out there? How can we help them to
come on this side of the channel and stop looking for jobs, stop the brain drain that's taking place in Pakistan, what would you advise them? That's a good but tough question, because they can, to be an entrepreneur, you really need to have this, guts of steel. You need to have a tough heart कि भाई you are going to persevere in light of you will fail. ठीक है, फेलियर तो गारंटीड है, छोटी सी होगी. आप सेल पिच करने जा रहे हैं किसी को, क्लाइंट ने आपको टाइम नहीं दे, टाइम क्या वहीं दरवाजे पे मना करके थैंक यू गुड बाय कर दिया, अब अगली दफ़ा आए. और आपने जो है पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की थी, घंटों लगाए थे और उन्होंने आपको 1 मिनट दिया. फिर आप जाएंगे, शायद वो आपको हेलो करके कह रहे हैं थैंक यू. यू कैन नॉट गिव अप. नंबर 1, ठीक है, परसिवियरेंस. दैट इज़ वन पीस ऑफ एडवाइस. नंबर 2 इज़ let's be practical also. Entrepreneurship requires कि जी your basic needs are met. There are 2 situations within which, in my opinion, entrepreneurship comes into play. Number 1, all your basic needs are met, and you have chosen कि जी I can afford to live a certain life. और मैं उसके साथ entrepreneurship करके try करता हूँ. नहीं होगा तो मेरे पास at least एक backup plan. दूसरी तरफ जहाँ entrepreneurship आता है, actually there's 3 I think. दूसरी तरफ जहाँ entrepreneurship आता है वो ये है, you have no plan, you have no other way out. This is it. It's all or nothing. And this is all you're banking on, क्योंकि you don't have a backup plan, you don't have वो जो एक support system होता है. तो आपने मतलब कहा कि यार ये तो चलना ही है, और आपने सारी ज़िंदगी इस पे सारी मेहनत लगा के आपने ट्राई कर ली. ठीक है. तीसरा ये होता है कि आप साइड पे कोई शौक है आपको, एक हॉबी है, ठीक है, गाड़ियों की मुझे हॉबी है, किसी को जी स्पोर्ट्स की हॉबी है, तो किसी को पेंटिंग की हॉबी है. जो भी हॉबी आप साइड में हॉबी कर रहे हैं, साइड में हॉबी से आपने कुछ सेल कर दी या कुछ आगे कर दिया, उसमें कोई पैसे बनाने का कुछ नहीं है आपका. समवन वांटेड इट, यू सोल्ड इट टू कवर योर कॉस्ट, शायद वो टेक ऑफ कर जाए. ये 3 एंगल्स होते हैं. तो इन तीनों में से आप आइडेंटिफाई करें पहले आप किस बकेट में फॉल करते हैं, वो बकेट क्लियर कर लें. फिर परसिवियरेंस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज बी क्लियर ऑन योर विजन. जाना कहाँ है? अगर आपको यही नहीं पता जाना कहाँ है, आप मेहनत करते रहेंगे, घूमते रहेंगे दायरे में, वो चक्कर में घूमते रहेंगे. दैट्स आइडेंटिफाई कर लें जाना कहाँ है, और वो कर दिया सारा क्लियर हो जाएगा. So what sort of an initiative can we take to guide such youngsters out? I think we should mentor. We should encourage a culture of mentorship. मतलब कि जो जैसे स्टूडेंट्स को आप इंगेज करें, उनको टॉक्स दें, लेक्चर्स दें और अपना टाइम निकालें कि आप उनको गाइडेंस दें कि जी देखिए जी हमारे ये एक्सपीरियंस है. आपको ये नहीं कहें कि तुम्हें ये करना चाहिए. यू शुड नेवर टेल पीपल कि व्हाट आई थिंक इज़ बेस्ट फॉर यू. यू डोंट नो व्हाट्स बेस्ट फॉर देम, यू डोंट नो देयर सिचुएशन. आप नहीं जानते इनकी घर की. No two situations are the same anyways. आप उनको सिर्फ ये कह सकते हैं देखिए जी मेरी सिचुएशन में मेरे साथ ये एक्सपीरियंसेस आए थे, और इस सोच के बेसिस पे मैं ये समझता हूँ कि अगर तुम्हारी जगह ये होता मैं ये करता बस. और ये मेंटरशिप अगर हम प्रोवाइड करते रहें, और अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ हम कर सकते हैं, छोटा बहुत इन्वेस्टमेंट अगर अफोर्डेबिलिटी है कर दें उनको सपोर्ट करने के लिए, और उनको डिसीजंस लेना सिखाएं. क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक एरिया है जहाँ एज एन एंटरप्रेन्योर आपको बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है. फॉरेन डिसीजन लेने होते हैं, मुश्किल डिसीजन लेने होते हैं, लेकिन डिसीजन आपने लेना. Okay, a cheat question here. From an investment banker's perspective, which are the right areas to go into right now in Pakistan? Because I believe strongly, and as we were discussing before the program, Pakistan is a land of opportunities. There's a lot of money to be made here. That being said, which are the right areas to be looking into? I think you should go up to the necessities. The basics. Keep it want, simple, keep it smart, keep it to the point. You want to capture if you want your product commodity business to target 180 million, stick to the basics. You want to target 1 million, go pick a niche product, like a fancy bakery or high-end vehicle sales, or something very niche. Charge a high price, low volume, simple आपका वहाँ भी है. दूसरे में high volume, price is low, लेकिन आप volume पे खेल रहे हैं. और यहाँ पाकिस्तान में I think you should play a volume business, क्योंकि आपको 6th largest country by population in the world. Why not take advantage of that? So that's where I would look. What do you see the future of Pakistan as an entrepreneurial nation? Do you see that happening? As an entrepreneurial nation, of course. यहाँ एक टर्म है मतलब जुगाड़ू,
Exactly. So Okay. true. You know, that is honestly what Jugaadu can sometimes be used in a negative connotation, but I think it's one of the greatest things because what it shows is Street smartness. Street smartness with some sort of intellectual acumen to do things, get the job done. ठीक है, sometimes the solutions are not the best and you know, भैया अगर गाड़ी में जुगाड़ू काम करेंगे तो safety compromise हो जाएगी ये वो. You have to be careful कि जुगाड़ू application कहाँ लगा. लेकिन the fact that people are coming up with this, मतलब their brains are working at that level means कि अगर आप थोड़ा सा इनको Positive कर दें और पॉजिटिव करें, guidance थोड़ी सी दे दें। एजुकेशन करके मेंटरशिप दे के ये वो गाइड करेंगे कि अच्छा ये हाँ। सोचना छोड़ के थोड़ा थोड़ा सा इधर हो जाओ भाई, हाँ। तो बिल्कुल सही आप- टारगेट है। क्यों नहीं है ये एंटरप्रेन्योर रिलेशन, आप इनको अपॉर्चुनिटी दें, सिक्योरिटी दे दें, सिक्योरिटी दे दें, बाकी सब और ऑनेस्टली इट विल फॉलो इनटू प्लेस. So I am very positive on the outlook here. Again, the whole question comes down to this: where are 180 million people going to go? Exactly. Such a spot on question. Thank you so much for joining us. Thank you for coming by. I Really can't enjoyed believe this. the time is up. I hate doing this, but thank you so much. We'd love to have you once again if you can give us time. Ladies and gentlemen, you've heard it from the charismatic Faizan Syed. You've heard it from the man himself. 180 million people. Where are they going to go? They have to eat, they have to wear, they have to educate, the whole 9 yards. Your success is just limited by your imagination. Go out there, give it a try. Take off for tonight. Stay tuned next week. Same place, same channel, same time. Allah Hafiz.